Yes, good afternoon, students. So late. What happened? Can you hear me, students? Can you hear me? Is the audio and video fine? Yes, sir. So students are entering inside. Okay, students. What exactly we did in the last lecture? Anyone remember, students? Sir, we did electric dipole. Okay, electric dipole. Did I do about Sir, you gave one sum also. okay, torque acting on a dipole? Did I give it to you all? Work done by electric dipole? Torque and work. Work done rotating a dipole and torque acting on an electric dipole. I must have done, yes, I must have done potential at a point due to dipole. Yes, sir. That was the last thing you did. बिकॉज डाइपोल तो ऑलरेडी हमारे सबनेट आगे मैंने टॉर्क भी आगे कर दिया था मैंने वर्कडन भी आगे कर दिया था ये पोटेंशियल एट पॉइंट आई हैव टू डू गॉसेस थ्योरम एंड देन फॉलोड बाय नेसेसरी कैपेसिटर्स द लास्ट पार्ट सर आपने वो सम दिया था फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट टी और फिर उसका आंसर था पी कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन के आर स्क्वायर वोल्ट. ओके फाइन दैट्स व्हाट आई गिव इट यू फाइन. Okay, students, let's move further ahead. Please pay attention now. That means when you're looking at this particular chapter, students, see how to go about this entire chapter part of it. And since we are interacting in a week, just once in a week we consider, so it's a long gap, maybe 6 days. Like a student who is wisely following the books properly or going to the board's books also, I've picked up from 11th and 12th connected. Both I'm doing it simultaneously. 11th is already done. 11th I'm picking up. There's one concept of 11th which is put forward Gauss's theorem. तो आज मैं गॉसेस थ्योरम 11th करूंगा लेकिन उसके एप्लीकेशन 12th में यानी सपोज if a student of class 12 right now who's having a physics textbook, okay, and if he opens the physics textbook he might come across applications of Gauss's theorem जो मैंने एक पेज भी नहीं किया वहाँ. I haven't done a single page on that. The reason is I didn't do Gauss's theorem at all from 11th everything is done except Gauss's theorem. And today I'll be picking up Gauss's theorem and its applications, okay, with respect to your 12 point of view. And as we move further ahead, we'll be speaking about with respect to your students, capacitors we consider, and that will be the end of the chapter for it. So today I'll work out with Gauss's theorem. I know you all joined in late also today. You all got the link late? Yes, sir. At 12:23. Sir, Okay. we just got the link 5 minutes back. Rahul sir sent us. Okay, Rahul, and because I called them up also, could not trace them, sent it to Rahul sir as well as Gyan sir both. Okay, students. Now please pay attention for this. Okay. Now we speak about Gauss's theorem. Gauss's theorem किसके लिए हम use कर रहे हैं? Gauss's theorem, students, is actually an analog. It's an identical to Coulomb's law we consider. So when you speak about Gauss's law, it's a very, very important concept which a student should keep in mind. And this particular concept is actually for, we consider is to understand all those mathematical relations for electric field intensity, students. Listen carefully. Around any shaped conductor.
Before going further ahead with this, I will make it very clear. Electric field intensity inside a metallic conductor is zero. No field lines pass through the conducting material we consider. Metallic conductor, no field lines passing through it. Electric field lines always passes through an insulator. They will always pass through an insulator. For a metallic conductor, we say that the field lines are superficial, we consider, externally we consider, but they will not pass inside at all. That is what a student should keep in mind while working out with this concept of electric field intensity. Now, when I speak about Gauss's law, we are trying to find out electric field intensity. Let us understand this concept, what exactly Gauss's law speaks about. Listen carefully, students. Suppose if I happen to take a point O, और इस पॉइंट पे मैंने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा. प्लीज पे अटेंशन एवरीबॉडी. आई एम गिविंग यू द लॉ. First, I'll explain the law and then we'll go for applications. There are 3 applications under it. Law is given in class 11 standard physics, electrostatics. Applications are given in class 12 physics, first 2 or 3 pages. 3 pages will be 3 pages of your electrostats. So I'm picking up that part of it. Now, consider point O और वहां पे मैंने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q रखा हुआ है. अगर मैंने ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q रखा हुआ है, तो of course there will be a certain region around it. What is that region we call? An electric field. Okay, so there is an electric field around it. So I'm trying to construct an electric field around it. Okay, this is an electric field around this particular unit positive charge. Now what I'll do? ये जो surface यानी अगर चार्ज अंदर की तरफ है, ध्यान से सुनना. If the charge is inside, students, and if I consider this as a surface, I can assume that the charge can be considered on the surface. The reason is why electric field lines for a unit positive charge will always start normally, always start perpendicularly from a given surface. And अगर भले चार्ज अंदर है तो मैं assume कर सकता हूँ कि field surface है. अगर suppose मैं ये surface पकड़ता हूँ तो now suppose if student 1 wants to pick up the surface, but if there is another student who will say कि sir जरूरी है कि हमें यही surface लेना, मुझे तो ये surface लेना है. तो अगर ये surface लेना है तो इसको निकाल दो ना, इसको निकाल दो. तो हम यहाँ पे लेंगे, ये surface लिया तो यहाँ से एक field line पास होगा. लेकिन students ये ध्यान में रखना, for a unit positive charge, for a single unit positive, there is only one and only one electric field line passing normally to the given surface. ये ध्यान में रखना. So a student who is listening to me will say, अच्छा सर यानी आप ये बोलना चाहते हो कि ये positive charge है, point O पे है, it has a certain region around it जो hypothetical है, दिखाई नहीं देता है. That means there is some electric field. उसका electric field है यहाँ पे, हमें दिखाई नहीं देता है. That's something hypothetical. यानी if in case if I consider कि अगर at a certain distance अगर मैं कोई surface area लेता हूँ और वहाँ पे मैं field lines के बारे में बताऊंगा, तो I'll assume that the field is perpendicular to the surface. The field is perpendicular to the surface. Absolutely true. अगर मैं ये surface लूंगा तो इसको मैं निकाल दूंगा. I'll try to consider this. That is why students, when you look into the books now, when you look into the books or when you look into a multiple choice question, any kind of questions, they do deliberately show it in this manner. They show it in this way and they'll show a field line coming out over here. कहाँ पे they'll show it in this way and they're coming out from here. At times they'll show it in this manner and they'll make it to come out from here. That means student has a view okay, from a given positive sciences, so many field lines are coming out. No, from a unit positive charge, there is only one and only one field line coming out. But now I've tried to go for different surfaces. अगर suppose मैंने ये surface लिया है, so now suppose if I happen to guess this is my surface, I've taken a very small area element over here. तो ये मेरा छोटा सा area element है. I'll consider this as ds. Again, this is an area element 1. तो दूसरा स्टूडेंट लेगा तो इसको अगर छोटा सा एरिया पकड़ लेगा तो दैट इज d2. इसने छोटा सा एरिया पकड़ लिया दैट इज d3. और दिस फील्ड लाइंस फॉर अ पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड्स, अगर वही मेरा नेगेटिव चार्ज होता तो हाउ एग्जैक्टली द फील्ड विल बी इनवर्ड्स, द फील्ड विल बी इनवर्ड्स, द फील्ड विल बी इनवर्ड्स. इतना क्लियर हुआ सबसे पहले? हाँ सर. So now we are trying to go for Gauss's law. Gauss's law के लिए what I'm consider, I'm taking a unit positive charge at point O, students. And what am I trying to do? I have tried to take a point P. Listen carefully, students. I have taken a point P somewhere on the surface of the conductor.
This point P is on the surface of the conductor, students. Okay. Now, if I say this particular point P is on the surface, that means I'll assume that the charge is on the surface of the conductor. The charge is on the surface of the conductor and it's originating perpendicularly. Okay. Now, when I want to consider, so इसका जो अगर सपोज मैंने जो एरिया वेक्टर अगर मैं लेता हूँ, सपोज अगर मेरा फील्ड लाइन इस तरफ जा रहा है, ठीक है, शायद इसका एरिया वेक्टर इज गोइंग स्लांट. Maybe I'll consider this as the area vector. I'll consider this as my electric field line. And I'll take this as the area vector ds for this particular unit positive charge which is on the free surface. What is area vector? What is area vector, students? Anyone? Can you tell me what is area vector? Students, you all have done electric flux and I made it very clear electric flux. I don't know why you're silent. Why you're silent? I don't understand that. Electric flux already मैंने बता दिया है students. Electric flux एक scalar product है और तुम लोग ने vectors में भी पढ़ा है. Please students, do keep in mind. Electric flux, if I happen to consider, is actually what? Electric flux is equal to E bar dot A bar. Electric flux is defined as electric field intensity passing through a given surface area of a charged conductor, students. Why people are so entering so late? मुझे पता नहीं चल रहा है. और ये सारे बैचेस को इंक्लूड कर दिया क्या अंदर राहुल सर ने? Okay, electric flux is equal to electric field intensity into area, students. तो यहाँ पे तुम्हारा जब फ्लक्स के बारे में हम बात करेंगे तो what will be? It will be E cos theta into A. अब ये जो एरिया वेक्टर है ये क्या होगा स्टूडेंट? एरिया वेक्टर इज ऑलवेज स्टूडेंट्स नॉर्मल टू द सरफेस. एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा. अगर सपोज मेरा सरफेस ऐसा है तो एरिया वेक्टर ये होगा. अगर मेरा सरफेस ऐसा है तो मेरा एरिया वेक्टर ऐसा होगा. तो यहाँ पे अगर आपका सरफेस ऐसा है, look at it. If the surface is in this manner, तो ये एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में गया. Is E and ds are they in the same direction? तुम बोलोगे नहीं सर, they are not in the same direction. What is the angle formed between them? Sir, it's very small. Let us say d theta. I'll consider in this case. The angle formed between them will be equal to theta we consider, which is very small we consider. Again, both of them are very small angles we consider. And अगर वो small angle नहीं है तो if you don't want to make it small, you can consider, simply consider theta. Doesn't matter. Simply we can consider theta itself only. That's the angle between the two. So your area vector and electric field are not parallel to each other to form an angle theta, and this electric field line is coming out normally through a given positive charge. This is my area part of it we consider. The distance, now सुना, the distance of this particular point P from the charge, let me take this as R, तो ये मेरा position vector हो गया. Assume करो कि ये तुम्हारा position vector है. Any distance of this particular element over here. Now try to understand this. Suppose अगर यही element को students, यही एलिमेंट को अगर मैं एक स्ट्रक्चर देता हूँ तो व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आई एम गोइंग टू गेट इट समवेयर. आई कैन से आई एम गेटिंग एन इमेजिनरी स्फेरिकल नेचर. एक स्फेरिकल नेचर मिल रहा है मुझे. यानी अगर ये मेरा सेंटर O है जहाँ पे मेरा पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स. इफ आई ट्राई टू ड्रॉ दिस पोजीशन वेक्टर एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस एरिया वेक्टर, at every point of the area vector, since this element is very small, ध्यान से सुनना, this area element is very small, students. What about these all distances? Sir, all these distances will be congruent to each other. कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ सर. एरिया है, अगर मैंने सरफेस एरिया बहुत छोटा लिया तो अगर मैं सरफेस एरिया के एक पॉइंट यहाँ पे P1 लेता हूँ, दूसरा P2 लेता हूँ, तीसरा P3 लेता हूँ, और अगर मैंने ये बहुत छोटा ले लिया तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ही नजदीक आ जाएंगे. अगर सारे पॉइंट्स बहुत ही नजदीक आएंगे तो ये सारे कॉन्ग्रुएंट साइड हो जाएंगे. ये पूरा रेडियस बन गया. नाउ इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व स्टूडेंट्स, ये जो सेंटर में हमें जो एंगल मिल रहा है, कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस एंगल वी कंसीडर? इस एंगल को क्या नाम दोगे तुम? सर थीटा. No, this theta is the angle between electric field vector and your area vector. I'll give you some other variable for this. Lekin what I call this angle is what we consider. This angle will actually give you a kind of a cone vision. चलो इसका एक दूसरा example लेते हैं. For example, you have got a watermelon.
Okay, I've got a watermelon and it's perfectly spherical in nature. Perfectly spherical है. तुम क्या करो, उसका एक छोटा सा एरिया एलिमेंट निकालो और ऐसे नाइफ से डीप अंदर से अंदर ले लो और उसमें से निकाल के कोन बनेगा तुम्हें. तो मैंने पूछा उस एंगल को तुम क्या बोलोगे? What exactly you call that angle is? Anyone? This angle is very small because the element is very small. अगर ये element very small है तो ये angle भी very small है. इस small angle को मैं नाम देता हूँ d omega and this I'll call as solid angle. Students, have you all come across this word solid angle anywhere? Have you all come across this word solid angle? Tanya says yes. Tanya, what exactly is solid angle? Can you give me the formula for solid angle? Can you give me the formula for solid angle? Durgesh is also saying yes. Solid angle है क्या? Yes, students, solid angle. Solid angle, students, is simply, yes, measure in steady area upon, yes. The area upon radius नहीं होगा. Hello? मुझे बताओ, does it have any, somebody posted the answer? Sir, I guess it was in steradian. Of course, the unit is steradian. The unit is steradian, that's correct. And Durgesh has put forward. And Kunj, Krish is correct. Saili, no, my dear. It's not upon radius, it's upon r square. See one thing, सबसे पहले ये dimensionless quantity है. यानी उसका dimensions होता नहीं, तो it's simply a ratio of what? Area upon r square. Solid angle is defined as. ध्यान से सुना, अगर ये छोटा angle है, तो हम क्या लेते हैं? We try to go for the component. अगर मैं suppose ये ds is not perpendicular, तो मैंने क्या लिया? ds cos theta I'll consider upon r square. Students, d omega is simply we can write in terms of ds cos theta upon r square. Yes, it's a supplementary physical quantity. Supplement का मतलब क्या, सानिया? जो तुम्हारे डाइट के अंदर होता है ना, खाने के अंदर जो डाइट होता है उसके अंदर सपोज योर मामा गिव्स यू प्रोटीन, तो एक टाइप का एक्स्ट्रा सप्लीमेंट हो जाता है. तो सेम वे फिजिक्स के पूरा स्टडीज के अंदर जब यू गो फॉर बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज तो उसके साथ में कुछ सप्लीमेंट होता है, वो मैथमेटिकल फिजिकल क्वांटिटीज होता है. एक होगा प्लेन एंगल, दूसरा है सॉलिड एंगल. Plane angle is measured in radians, solid angle is measured in steradian. Plane angle is length of arc upon unit radius. Solid angle, students, is area upon r square. लेकिन यहाँ पे अगर सपोज मैंने एरिया का कंपोनेंट ले लिया तो ds cos theta I can consider upon r square I can consider. अगर एरिया नॉर्मल हो जाएगा तो cos of 0 will be equal to what? 1. cos of 0 है तो ds upon r square हो जाएगा. So always we go for component. क्या ये क्लियर हुआ सबको? अभी मुझे ये बताओ, चलो इसको भूल जाओ. अगर मैं पूछा स्टूडेंट्स कैन यू गिव मी अ करेक्ट रिलेशन फॉर प्रेशर? चलो गिव मी अ करेक्ट रिलेशन फॉर प्रेशर. Pressure exerted by liquid column या pressure exerted by particular lamina. तो तुम क्या बोलोगे? तो स्टूडेंट्स हमेशा प्रेशर के बारे में बोलेंगे तो क्या लिखेंगे? प्रेशर को कैसे लिखेंगे? F cos theta upon A लिखेंगे. ये एक करेक्ट रिलेशन है क्योंकि फोर्स कैन बी एक्टिंग ऑन अ गिवन सरफेस में भी इन दिस डायरेक्शन आल्सो. दैट मींस इट्स एक्टिंग एट एन एंगल थीटा. लेकिन वेरी एक्जैक्टली प्रेशर इज मैक्सिमम. अगर मैंने पूछा गिव मी द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम प्रेशर स्टूडेंट्स, तो तुम्हारा F परपेंडिकुलर हो जाएगा यानी cos of 0 1 हो जाएगा. यानी अगर तुम्हारा फोर्स अभी ऐसे लगा तो परपेंडिकुलर हो गया, तो तुम्हारा थीटा क्या हो गया? तो थीटा इज टेंडिंग टू 0 और cos of 0 will be 1, so force will be perpendicular. उसको तुम क्या बोलोगे? मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम प्रेशर. Right? So pressure maximum is force acting normally per unit area, and this perpendicular force is called as thrust per unit area. लेकिन अगर किसी ने जनरलाइज पूछा डिफाइन प्रेशर, तो सिंपली कंपोनेंट ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, खत्म हो गया. अभी सामने वाला समझ जाएगा कि भाई उसने कंपोनेंट ऑफ फोर्स ले लिया तो थीटा भी क्या होना, अगर थीटा 0 हो गया तो मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो गया तो मैक्सिमम प्रेशर हो जाएगा. इस परपेंडिकुलर फोर्स को हम थ्रस्ट बोल देंगे. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ सर. Yes, sir. So now when I speak about in terms of, because see whenever students learn this particular part of solid angle, I think solid angle बहुत अच्छा concept है. Okay, solid angle if you happen to consider, then solid angle if we consider is actually what? Area upon r square, students.
It's area upon r square. So it's ds cos theta upon r square. Now suppose if I happen to go to find out the d omega for the complete sphere, यानी अगर suppose मैं इस geometrical shape को पूरा complete कर देता हूँ, तो कहना है integration cos of theta will be 0, cos of 0 will be 1. तो integration of d omega क्या हो जाएगा? Omega, students. Agreed. This is integration of d omega over the closed surface, पूरे surface के लिए over the closed surface. Cos of 0 will be 1. What will be? Sir, 1 upon r square तो बाहर आ जाएगा. What is integration of ds? Sir, this is actually geometrical shape of a sphere. तो इसका क्या होगा? 4 pi r square will get cancel. What's my answer? 4 pi square radian. क्या ये क्लियर हुआ सबको? क्या ये क्लियर हो गया सबको? यानी बिफोर गोइंग फॉर गॉसेस थ्योरम ये क्लियर होना जरूरी है. अगर ये क्लियर होगा तो ही आगे तुम बढ़ सकोगे, नहीं तो यू विल नॉट गेट गॉसेस थ्योरम एट ऑल. Clear to everybody? Yes, sir. अरे हाँ या ना तो बोलो. Yes. Yes, sir. ओके फाइन. तो ये तुम्हारा गॉसेस है. मैंने अगर मैंने सॉलिड एंगल ले लिया फॉर द कंप्लीट सरफेस यू कंसीडर, तो अगर इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा कहाँ पे भी आ गया तो सिंपली आंसर क्या हो जाएगा? 4 पाई. सॉलिड एंगल इज डी ओमेगा वी कंसीडर फॉर अ स्मॉलेस्ट एंगल. नाउ लेट अस गो बैक टू गॉसेस थ्योरम. तो मेरा चार्ज प्लस था, पॉजिटिव चार्ज. अज्यूम किया कि वो सरफेस पे है, एलिमेंट बहुत ही छोटा है, डिस्टेंस आर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्मली जाता है फ्रॉम द सरफेस वी कंसीडर. तुम्हारा एरिया वेक्टर इस तरफ गया, सो देयर इज एन एंगल थीटा वी कंसीडर. So now what should I do? So either you try to drop ds onto E. Answer सुनना. Either to have ds dropping perpendicular to E or drop E perpendicular to ds. Yani if I want to go for the formula for flux, then what is the flux passing through? The answer is now, what is the flux passing through the surface area? Is this flux very large or very small? We'll say very small. A small flux passing through a small element. What exactly the formula will be? The formula will be E bar dot ds bar, because it's a dot product. It's a scalar product of two vectors, scalar product, component cos theta. If I go for flux we consider, so what exactly the unit I'll consider will be? Anybody? Newton, Coulomb inverse meter square, या voltmeter. तो समझ में आ रहा है फ्लक्स का यूनिट? हाँ सर. प्लीज ये सब याद रखो यार. यूनिट्स इज मोर इम्पोर्टेंट. अगर तुमने यूनिट समझ में आया तो बहुत सारी तुम्हारी तकलीफियां फिजिक्स में दूर हो जाएगी. हमेशा यूनिट्स के ऊपर बहुत कॉन्सेंट्रेट करना है. Now we try to find out flux. We consider what is the electric field intensity. अगर मैंने पूछा student what's the formula for electric field intensity for a point just outside a conductor, we consider. So that already we have learned it earlier. Electric field intensity का formula हम लोगों ने पढ़ा है. Anybody knows the formula? Electric field intensity for a point at a distance r from a charged conductor. So what exactly formula are you getting it? किसी को मालूम है? One upon 4 pi epsilon naught k for a medium q upon r square. क्या ये क्लियर हुआ? Yes, ये sir. पढ़ा है कि नहीं पढ़ा स्टूडेंट्स? तो क्या कर रहे हो? You're making me cry. I feel like crying. I tell my mama, these students are harassing me a lot. The way teachers, when one doesn't do a proper, how do you say to your parents, I'm not able to get it? So much of complaints. The same thing I can complain to my parents also. क्या हो रहा है ना? Okay, Tanya, don't laugh, okay? Electric field intensity is equal to 1/4 pi epsilon P for a medium Q upon R square. Students, ये फॉर्मूला बता चुका हूँ मैं तुम लोगों को. Yes sir. आना जरूरी है क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने ये बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी along the axis, along the equator, E axial is equal to twice E equator. ये सब डिराइव किया हुआ है पहले हम लोगों ने. तो प्लीज डू रिमेंबर दीस. ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला. अभी देखो ये लिख सकता हूँ या तो आई कैन राइट 1/4 pi instead of epsilon 0 k for a medium. Can I simply write an epsilon for a medium? Yes sir. Q by r square. That's a formula which I should know it. Now when I speak about for the flux, what exactly consider is flux passing through it is very small, so it's into this.
what exactly d phi will be equal to? So it's e cos theta into ds. I can go for component. अभी तुम्हारी मर्जी है, तुम e को ड्रॉप करो या ds को ड्रॉप करो. I get it. कौन सा तुम्हें comfortable feel that you can go for it. So e cos theta. यानी ये formula you can order either e cos theta into ds या a into ds cos theta we consider. Now when I move further in this case, can I substitute the value of e over here? Yes, I've got the formula for e. What exactly d phi will be? E is what? 1 upon 4 pi epsilon 0 k for a medium q upon r square. Agreed? ये e का आ गया formula. Cos theta into ds. Is this much clear, students? Yes, sir. Everybody, all of you all. So now, Yes, sir. Therefore, what exactly d phi? Consider your electric flux. ये e, मैं नीचे e लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी तुम शायद जो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे हैं, यहाँ पे तुम फ्लक्स दिखा दे रहे हो e के हिसाब से, लेकिन जैसे तुम इसके बाद में मैग्नेटिज्म में जाओगे तो सर वहाँ पे phi और नीचे b लिखेंगे, वो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाता है. So there is electric flux, there is magnetic flux. There are only two kinds of flux, electric flux and magnetic flux we consider. ये तुम्हारा electric flux है e. So 1 upon 4 pi ये e का formula होता है. Now if you try to rearrange the terms, what am I trying to get it? So if you look over here, you'll get it as q upon epsilon naught k for a medium r square ds cos theta, sorry, ds cos theta, ये 4 pi यहाँ पे आएगा upon r square में यहाँ पे लिखना. See the terms, I'm rearranging students. Students have rearranged the terms. Listen carefully. 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square. So what I wrote q epsilon naught q for a medium 4 pi को आगे लिख दिया, ds cos theta r square को पीछे ले लिया. Now students, can you tell me what is ds cos theta upon r square? D omega, that's solid angle. So flux, which is very small, is equal to q upon 4 pi epsilon naught k for a medium into ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा d omega. But students, are we trying to find out flux for small area or for the total area we consider? Around the given charge we consider. You can consider for the total flux around the given charge we consider. So now if I have to go for electric flux, the answer is electric flux around a closed surface. The circle on the integral sign speak about that we are trying to go for the closed surface we consider. The charge is enclosed in that surface. Is this charge enclosed? Yes. So the flux is related to that. Suppose अगर ध्यान से सुनना, suppose अगर मैंने कोई ये सर्किल कंडक्टर लिया है और यहाँ पे मैंने लिया है +5 माइक्रोकूलम, -10 माइक्रोकूलम, +3 माइक्रोकूलम. So what is the net charge inside? Net charge inside you can add, because already I have told you that electric charges can be added or subtracted. There is additive property of charges also, and electric charges is a scalar quantity. तुम add subtract कर सकते हो. तो इसको क्या करोगे? 5 + 3 कितना होगा? 8. 8 में से -10 निकाल दिया तो कितना बचा? -2 माइक्रोकूलम. -2 का मतलब क्या हुआ? ये नेट बॉडी नेगेटिव चार्ज हो गया. स्टूडेंट्स, ये नेट सिस्टम क्या बन गया? नेगेटिव. नेगेटिव हुआ तो फील्ड बाहर की तरफ भेजेगा या अंदर की तरफ लेके आएगा? अंदर की तरफ. वही अगर सपोज मैंने इसको 10 ले लिया होता तो मेरा आंसर +10 18 होता. +10 18 का मतलब द नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज पॉजिटिव. अंदर ही है, पूरा पॉजिटिव है, तो फील्ड किस तरफ जाएगी? बाहर की तरफ जाएगी. ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ सर. अगर सपोज मैंने +5 माइक्रोकूलम लिया और दूसरा मैंने -5 माइक्रोकूलम दिया अंदर, तो द टोटल चार्ज इनसाइड इट 0. देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट इनसाइड. इज दैट क्लियर? दैट मींस can I say suppose if I take a conductor, and if I say I have a dipole placed inside the conductor, electric dipole placed inside the conductor, what is the net charge of the conductor? Come on, tell me. I've taken a charged conductor and I've placed an electric dipole inside it. What is the net charge of the conductor? Jaldi, fast. 0. क्यों? क्योंकि सर इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या है? 2 चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन नेचर. सर मैग्नीट्यूड आपने इक्वल दे दिया है, ऑपोजिट इन नेचर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो रिजल्टेंट 0 आएगा. ओके. Now, so we go for the net electric flux for a charge enclosed surface. What is that? The total electric flux.
The total electric flux enclosed in the surface we consider the integration of this. The integration of d phi e will be circle on the integral circle I put in the circle. It's q upon 4 pi epsilon naught k for a medium into d omega. What is integration of d phi? It's the total flux or the net electric flux, or we use the word total electric flux over a closed surface. Over a closed surface, okay, is equal to. Now we students, what is constant? So the मतलब Q constant था, magnitude of charge constant था, 4 pi epsilon 0 is 8.85 into 10 raised to minus 12 Newton inverse meter square inverse Coulomb square. सर आप इतना फास्ट बोलते हो ना, एट टाइम्स हमें पता भी नहीं चलता क्या बोल रहे हो, है ना? हम सब सुन रहे करके, थोड़ा धीरे से बोलो ना, थोड़ा धीरे से बोलो ना. एक गाड़ी अंदर से बैंड से दादर से बैंड चलिए किसी भी तरह, लेकिन स्टूडेंट्स ऑलरेडी और यू नो इट. एंड जो चीज एकदम शांति से होगा उसको मैं शांति से बताऊंगा. जहाँ पे मुझे मिलता है कि ये शांति होनी चाहिए वहाँ पे शांति, लेकिन ये सब चीजें बता चुका हूँ. सो समवेयर और द अदर तुम अगर रिवाइज करके बैठोगे ना स्टूडेंट्स, तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से ग्रास्प होगा. ओके, नाउ q अपन 4 पाई एप्सिलॉन और q फॉर अ मीडियम, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारे कांस्टेंट हो जाएगा. q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 k फॉर अ मीडियम इंटीग्रेशन ऑफ dw. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dw ओवर अ क्लोज्ड सरफेस? ये आएगा. इसको Yes. सॉल्व किया तो आंसर क्या आया? 4 pi. 4 पाई. तो कैन आई से q upon 4 pi epsilon naught k for a medium into 4 pi will get cancelled. Now can I say what is the formula for total electric flux, students? The total electric flux over an enclosed surface, that's is actually given by 1 upon epsilon 0 k for a medium times the total charge enclosed by surface. ये तो मैंने एक चार्ज दिया. सपोज अगर मैंने एक की जगह पे अनेक दिया होता, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, तो सबका आंसर यहाँ पे होता. यानी तुम क्या करो मालूम है? सपोज अगर मैंने Q1 दिया होता, Q2 दिया होता, Q3, तो यू फाइंड आउट फ्लक्स फॉर Q1, देन यू फाइंड आउट फ्लक्स फॉर Q2, देन द टोटल फ्लक्स को ऐड करोगे तो ये कैपिटल Q बन जाएगा. यानी ये एक्चुअली क्या मालूम है? अलजेब्रिक सम ऑफ Q1. अगर मैंने एक से ज्यादा दिया तो where I equal to the first charge, so I equal to nth charge that I can consider this. क्या ये क्लियर हुआ सबको? हाँ सर. Algebraic sum of Qi, where I consider to be the first charge, so I equal to n number of charges, but where enclosed in a conductor. यानी गॉसेस थ्योरम को अगर यूज करना है स्टूडेंट्स, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, द चार्ज शुड बी एनक्लोज्ड इनसाइड द कंडक्टर, then only it's applicable, otherwise it's not applicable at all. तो जब भी सर तुम्हारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर करेंगे, गॉसेस लॉ पूछेंगे या गॉसेस थ्योरम यूज करेंगे, तो ही विल ट्राई टू सी टू इट दैट द चार्जेस आर इनसाइड, और उसके अराउंड वो कंस्ट्रक्ट करेंगे. तो ओरिजिनल जो तुम्हारा कंडक्टर था, ध्यान से ना, ओरिजिनल जो कंडक्टर था वो चार्ज का डिस्टेंस एक अलग होगा, और अगर वो उन्होंने एक सरफेस क्रिएट किया बाहर, तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर अलग होगा. तो ये हमेशा ध्यान में रखना. दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल समबडी इज एक्सप्लेनिंग दिस चैप्टर. हाँ बोलो Sir, can you repeat this statement once again? समझा नहीं. वो कंडक्टर वाला भी. अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये अलजेब्रिक सम वाला टोटल चार्ज, मैंने ये बोला कि जब भी तुम प्रॉब्लम सॉल्व करते हो यहाँ पे या गॉसेस लॉ यूज करोगे स्टूडेंट्स, तो हमेशा ये ध्यान में रखना कि द चार्ज शुड रिसाइड इनसाइड अ कंडक्टर. अभी देखो एक एग्जांपल देता हूँ मैं. चलो सर एक्सप्लेन, मेरे को समझ में नहीं आया. लेट मी पुट फॉरवर्ड एन एग्जांपल. ध्यान से सुनना. सपोज अगर मैंने कुछ स्फीयर दिया तुम्हें, देखो ये स्फीयर, ओके, आई एम शोइंग यू हियर. स्टूडेंट्स, होप यू आर एबल टू सी दिस पार्ट ऑफ द बोर्ड. Yes sir. अभी देखो, सपोज मैंने ये सेंटर O दिया और मैंने स्फीयर दिया और मैंने ये ग्लास स्फीयर दिया है. फिर मैंने ग्लास स्फीयर दिया है और उसको मैंने रब कर दिया सिल्क से, तो ऊपर चार्ज कौन सा इंड्यूस होगा? पॉजिटिव, है ना? अभी हाँ सपोज सर. मैंने पूछा, अगर मैंने पूछा ये जो स्फीयर है इसका रेडियस कैपिटल है, चलो मैंने पूछा स्टूडेंट्स, आई वांट टू यूज गॉसेस थ्योरम फॉर दिस पर्टिकुलर कंडक्टर, तो तुम क्या करोगे? तो तुम बोलोगे सर एक चार्ज यहाँ पे, दूसरा चार्ज यहाँ पे है, तीसरा चार्ज यहाँ पे है,
चौथा चार्ज यहाँ पे, यानी सर 4 चार्ज है, तो ये मेरा जो टोटल चार्ज होगा वो अलजेब्रिक सम होगा, इधर आएगा, यानी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, वो तो पता चला, 1/एप्सिलॉन K तो आएगा, लेकिन गॉसेस लॉ कभी एप्लीकेबल होता है ओवर अ क्लोज सरफेस होना जरूरी है, यानी चार्ज शुड बी इनसाइड नॉट आउटसाइड। यहाँ पे तो चार्ज सरफेस पे, तो अगर उसको अंदर लेना है तो मैं करूँ क्या, तो एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस हम क्रिएट करते हैं, यानी सेंटर को ही रखता हूं लेकिन मैंने जानबूझ के एक डॉटेड लाइन बना दिया और उसको मैंने ले लिया है स्मॉल आर। अभी अगर ये चार्ज यहाँ पे है तो मैं अज्यूम करूंगा कि चार्ज यहाँ पे और फील्ड इस तरफ जाएंगे। नाउ कैन आई से all these charges are present inside this dotted surface. What is this dotted surface? I'll call as Gaussian surface. क्या ये क्लियर हुआ? हाँ सर, समझा। यानी कभी भी गॉसेस लॉ यूज करना स्टूडेंट्स, आंख बंद करके ये ध्यान रखना, चार्जेस हमेशा अंदर होंगे। यानी तुम्हारा जो मेन ऑब्जेक्ट होगा उसका रेडियस अलग होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे गलतियां करते व्हाइल सॉल्विंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और जो तुम्हारा गॉसियन सर्फेस होगा उसका डिस्टेंस अलग होगा। इज दिस क्लियर? यस। Yes, So sir. now if I want to give a statement onto this, then what exactly statement is? Down to similar statement is total. Look at my finger. Exactly, or look at the pen. Okay. Total electric flux. Total electric flux through a closed surface. Total electric flux through a closed surface is equal to 1/epsilon 0 K of a medium times 1/epsilon 0 K medium times का मतलब मल्टीप्लीकेशन। अगर तुम्हें इतना ज्यादा नहीं बोलना है तो epsilon 0 K for a medium की जगह पे सिंपली कैन आई राइट डाउन epsilon for a medium? है ना? हाँ सर। तो वापस मैं बोल रहा हूँ स्टेटमेंट, ध्यान से सुनना। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, total electric flux through a closed surface is 1/permittivity of a medium times permittivity of medium times what? The net charge, the total charge, the net charge enclosed by that surface, net charge enclosed by that surface। तभी जाके आंसर समझ ये क्लियर हुआ? हाँ सर। If you want, I'll give you the statement, but before that, if you want to copy, or shall I erase this part? सर only 1 minute. Okay. और erase करेंगे तो उसका सिर्फ statement में देता हूँ। Okay? So that whenever you go for it, you should go for the statement. सर मतलब जो आपने अभी एग्जांपल दिया में चार्ज बाहर था, so when the case is this type of case is there, we have to assume that there is a Gaussian surface. You have to construct a Gaussian surface, imaginary surface, और वो बॉडी के ऊपर है। अगर तुमने स्फेरिकल लिया तो स्फेरिकल ले लो, अगर तुमने सिलेंडर लिया तो सिलेंडर ले लो, करेंगे, लेकिन वो चार्ज एनक्लोज होना जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर।
Yes, students, can I erase it now? Yes, sir. Okay. Those students who wants to put down the statement and the statement, and they are speaking it out. Okay. The statement is, students, total electric flux. Total electric flux. Is that clear? Total electric flux through a closed surface. Total electric flux through a closed surface is 1 upon permittivity of medium times permittivity of medium times the algebraic sum of net charge. Algebraic sum of net charge enclosed by the surface. Algebraic sum of net charge enclosed by the surface. So I can also write down total electric flux will be equal to 1 upon epsilon 0 K for a medium. Algebraic sum of Q can be written as capital Q. So I can also write as Q upon epsilon 0 K for a medium. And students, कहाँ पे भी flux आएगा तो I can use the formula Q upon epsilon 0 K for a medium. क्या ये clear हुआ? Now we go for applications. अभी applications में it's the first one which is very easy to get it. Suppose अगर first application जो है तुम्हारे लिए to understand electric field intensity. Okay, electric field intensity due to a uniformly charged spherical shell or electric field intensity due to a uniformly charged spherical shell we consider, or hollow sphere. We need to find out electric field intensity for this. Okay, students. So we are trying to go for the first one, electric field intensity due to uniformly charged spherical shell, hollow sphere we consider. Now when I go for the diagram for it, okay, we consider that there is a spherical shell. This is the center of the spherical shell. This I'll take it as capital R. Again it. The charge we consider is on the surface of this particular spherical shell. Where the charge is, it's electrically charged and the charge always resides on the surface. उसका मतलब मैंने क्या किया मालूम है? Electrical intensity due to a uniformly charged spherical shell का मतलब think as if कि मैंने एक hollow metallic conductor ले लिया और उसको मैंने electrically charge कर दिया, या एक hollow glass sphere लिया है, I get it, और उसको मैंने rub कर दिया silk से, तो charge है induced on the surface. What is the radius of this particular hollow sphere? Capital R. Now I need to find out electric field intensity due to a uniformly charged spherical shell or hollow sphere. मुझे electric field intensity का relation चाहिए, तो how do I go about? तो अगर मैं गॉसेस थ्योरम यूज करता तो स्टूडेंट विद सर उसके लिए तो आपको चार्ज अंदर चाहिए, ये तो चार्ज बाहर है, तो हम क्या करेंगे? we'll try to construct a Gaussian surface. So what we'll go for? First step is construct
Gaussian sphere around the given spherical or hollow sphere of radius smaller. So now if I happen to consider okay, you can consider the entire circle. तो मैंने यहाँ पे assume किया कि ये जो positive charge है अभी यहाँ पे है, and now if I consider the distance, ये जो distance हो जाएगा students, ये smaller हो जाएगा. Is this clear with everyone? Yes, So sir. now what do I assume? I assume that the charge यहाँ पे था. Now I assume that the charge is at point P, and it is just outside the surface. Now, if I take this as my Gaussian surface, this is my Gaussian surface. I'll try to go forward. So the concept goes with respect to your proof. तो एक छोटा सा मैं एलिमेंट अज्यूम करूंगा. ध्यान से देखना. मैंने इसके यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट मैंने अज्यूम किया. ये तुम्हारा एलिमेंट आया. Agreed. The charge is on the surface we consider ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है. अगर मैंने देखा यहाँ पे तो तुम क्या करोगे सर? यहाँ पे तुम बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. ध्यान से देखना. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन due to this positive charge, students, okay, and the area vector, both of them are parallel to each other. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज कमिंग आउट नॉर्मली. यानी यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा जो E और DS है स्टूडेंट्स, E bar and DS bar, both of them are parallel. Therefore exactly theta will be 0. So cos of 0 क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा. So can I say therefore flux will be maximum d5. Therefore electric flux, infinitely is a very small electric flux, will be maximum through what? Through उस एरिया में DS में. क्या ये क्लियर हुआ सबको? हाँ सर. सरफेस मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, उसका एरिया वेक्टर जा रहा है परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर जा रहा है. ई और डीएस दोनों परपेंडिकुलर है. सॉरी, ई इज परपेंडिकुलर डीएस, डीएस इज आल्सो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. बोथ ऑफ देम आर पैरेलल टू ईच अदर बट परपेंडिकुलर सरफेस. आई रिपीट, E and DS are parallel to each other but perpendicular to the surface. It's like this. Think as if this is the surface area and this is the electric field vector. It's like this. Both of them are perpendicular to the surface but parallel to each other. So theta, the angle between them is 0, cos of 0. Now we need to go for the derivation part of it. Let us go for the small electric flux. So the infinitesimal or very small electric flux passing through the element, what exactly consider will be? So ये होगा तुम्हारा E dot ds aggregate. So d5 will be equal to what? So it's E cos theta into ds, but cos of 0 will be 1. Therefore exactly electric flux will be equal to E into ds we consider. Is that clear? But are we trying to find out electric flux for the small element or for the total Gaussian surface? For the total Gaussian surface, so you have to go for integration on both the sides. Integrate both the sides. So integration of total electric flux around the closed surface we consider. Answer is now is equal to integration of E into ds around the closed surface. ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा total electric flux हो जाएगा. Will be equal to what? Will be equal to what? सर यहाँ पे total electric flux, ये तो E constant है, electric field intensity at a given distance all the time remains constant. अभी क्या होगा? Integration of ds हो जाएगा. What is total electric flux? The total electric flux will be equal to E. What is integration of ds? Integration of ds यानी इसी एलिमेंट को सपोज मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, where ds initially starting from 0, I getting it, to the total area we consider. यानी यहाँ से मैं शुरू करूँगा and if I move all the way around the total surface we consider, what exactly integration of ds will be? Sir 4 pi small r square. क्या ये क्लियर हुआ तुम्हें? हाँ सर. ये होगा surface area of the sphere हो जाएगा स्टूडेंट्स. ये जो इंटीग्रेशन ऑफ ds होगा ना, बिकॉज इट्स अ हॉलो स्फीयर. मैंने जब डायग्राम दिया है, प्लीज when a teacher draws a diagram on the board or when somebody is teaching electrostatics and drawing the diagram, they will show in a plane. ये एक प्लेन xy प्लेन है, लेकिन अगर इसी ऑब्जेक्ट को मैं अगर हवा में बिठा दूं तो फुटबॉल की तरह है.
it's a 3-dimensional भी कंसिडर। तो उसको देखते हुए तुम कहोगे हाँ सर उसका जो सरफेस होगा वो पाई स्क्वायर नहीं होगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये क्लियर हुआ? हाँ सर। नाउ इफ आई हैपन टू गो फर्दर अहेड, तुम्हें क्या चाहिए सर? आपको तो फॉर्मूला ही देखो, आपका आ गया ई। हेडिंग देखो, हेडिंग देखो, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल और यानी सर आपको ई का फॉर्मूला चाहिए, तो ई क्या होगा? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपन 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई का फॉर्मूला होगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपॉन 4 pi small r square. And as per Gauss's law, what is the total electric flux? Because this is for the Gaussian surface. What is total electric flux? The total electric flux is 1 upon epsilon 0 k times the total charge. So can I write on this part over here? Reason using Gauss's law. देखो अब यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं, तो वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं क्या डायरेक्टली नहीं लिख सकता हूँ मैं? ये क्या लिखूंगा? Q अपॉन epsilon 0 k for a medium। ये किसका हुआ? ये इसका फॉर्मूला हुआ into 1 upon 4 pi r square। अरे सर ये तो फॉर्मूला आपने पहले भी बता दिया था। यानी स्टूडेंट्स जो फॉर्मूला मैंने कोई भी कंडक्टर के लिए बताया था डिस्टेंस r और स्फेरिकल कंडक्टर के लिए सेम, वो यहाँ से आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल और hollow sphere, what's the formula? 1 upon 4 pi epsilon 0 k for a medium Q upon R square, and this answer will be Newton Coulomb inverse. Is this clear with everybody? हाँ सर। Yes sir. लेकिन ये किसके लिए है? ये तो हमारा गॉसियन सरफेस के लिए है। अभी ध्यान से सुनना, जैसे जैसे मैं डिस्टेंस आगे बढ़ाते जाऊंगा क्या होगा? As distance decreases, will the electric field intensity will increase or decrease? Decrease. यानी ग्राफ एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, ग्राफ एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। Agreed? Will decrease? Where exactly? Yes, it will decrease. Exponentially consider. On the surface at point R, what happens in this case? What exactly consider? So it will be maximum over here for this. Agreed? अभी suppose, ध्यान से सुनना, अगर suppose मैंने पूछा if this particular charge is over here, यानी अभी तुम्हारा देखो, ध्यान से सुनना, अभी तुम्हारा पोजीशन देखना प्लीज। सपोज अगर मैंने बोला if small r is equal to 0, if small r is equal to capital R, and if small r is greater than capital R, तो क्या होगा? तो हाउ डू आई कंसीडर? तो तुम्हारे फॉर्मूला कैसे आते हैं बताओ? अगर मैंने पूछा, ध्यान से सुनना, अगर ये पॉइंट ई को मैंने सेंटर में ले लिया होता तो स्टूडेंट्स आर मेरा 0 जाता, तो कैन यू टेल मी व्हाट अबाउट माय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट? विल इट बी इनफाइनाइट? Zero. There is no there is no electric field intensity inside a charge conductor। भले मैंने आर को, तो ये मत सोचना कि 1/0 का मतलब इनफाइनाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनफाइनाइट नहीं। Go back to the basic concept. There is no electric field intensity inside a charge conductor। ये हमेशा ध्यान रखना, inside a charge conductor E हमेशा 0 ही रहेगा। सरफेस के ऊपर कैसा होगा? जब मेन स्फीयर ये है, तो उसको अगर मैंने लेके आना तो कैसे लेके आऊँ? कैसे लेके आऊँ? तो तुम्हारा Q अपन R पर आ गया। Can I write down? ध्यान से सुनना, can I write down this in terms of charge per unit area? ध्यान से सुनना students. What exactly is sigma? Everybody listen carefully. What is sigma, students? If I have to consider, okay, what exactly sigma I can consider? Can you tell me what is sigma stands for? Surface charge density. याद आ रहा है? ये सब कुछ सिखाया मैंने। Please, I've already told you. Lambda, charge per unit length. Sigma, charge per unit area. Charge per unit volume. Linear charge density, surface charge density, volume charge density। और मैं पहले बता चुका हूँ। And this I made it very clear comparing with your moment of inertia का concept. Linear mass density lambda is equal to dm by dl. Surface mass we consider, dm by dl we consider, and volume we consider. So ये क्या बताता है? Charge is distributed along the length. भले infinitesimal charge for infinitesimal length. Charge distributed on the surface. ये होगा coulomb per meter, ये होगा coulomb per meter square, ये होगा coulomb per meter cube. And this is charge distributed on the surface. Charge distributed on the volume. यहाँ पे क्या? Charge is distributed on the surface. So can I know sigma is what?
सर मेरा मेन चेयर यहाँ ये है, ध्यान से सुना, मेरा मेन चेयर ये है ना कि ये है। तो अगर मैंने पूछा स्टूडेंट्स कैन यू गिव मी द फॉर्मूला फॉर सिग्मा फॉर दिस, क्यों नहीं, चार्ज पर यूनिट एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। क्या ये क्लियर हुआ? हाँ सर। Now can I substitute capital Q as sigma into 4 pi r square यहाँ पे? हाँ सर। Agreed. If I were to consider this case, so can I substitute this? So Q की जगह पे can I put sigma upon 4 pi r square? Yes, 4 pi r square. So what's my formula for electric field intensity? So Q की जगह पे आप sigma into 4 pi r square, तो 4 pi से cancel होगा, तो what's my formula? Sigma upon, sigma into capital R square. Epsilon 0 K for a medium into small r square. क्या ये clear हुआ? हाँ सर। यानी स्टूडेंट्स अगर उन्होंने पूछा है ट्राई टू गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ पॉइंट वेरी क्लोज टू द चार्ज कंडक्टर, तो आई कैन राइट इन टर्म्स ऑफ r स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। लेकिन ध्यान से सुनना, अगर उन्होंने बोला कि पॉइंट P इज ऑन द सरफेस, everybody listen carefully, what will my small r will be equal to? What is my small r will be equal to? Capital R. Can I put small r as capital R over here? हाँ सर। Capital R square R get cancel. So now if I ask you, can you tell me what is the formula for electric field intensity? ध्यान से सुनना, electric field intensity for a point very close and on the surface of a given charged spherical conductor. तो तुम्हारा फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स E is equal to sigma upon epsilon naught K for a medium. Or can I run sigma is equal to charge per unit area? So Q upon 4 pi epsilon naught K into capital R square. Clear हुआ स्टूडेंट? Yes. क्या ये सबको समझ में आया? Many students must be thinking कि what the hell is he doing? लेकिन ये बहुत ही important concept है और इसके 4 different types of MCQs I can ask you only for spherical shell. 4 अलग-अलग. Electric field intensity inside a spherical shell 0. Electric field intensity at a point distance r greater than capital R 1/4 pi epsilon naught K into R square. Electric field intensity, ध्यान से सुना, electric field intensity in comparison with capital R and small r, sigma capital R square upon R square. Electric field intensity for a point very close to the charge conductor, main conductor, sigma upon epsilon 0 K for a medium, or Q upon 4 pi epsilon 0 K into R square. So many mathematical relations for only spherical conductor. That's why when you get a particular mathematical formula, students तो उसकी 4-5 अलग-अलग way of approach होता है, and that is why the chapter becomes lengthier. And that's why the number of MCQs becomes lengthy. And that's why students pull their hair while solving questions on physics. They bang their heads onto the wall. You all do that? People do that? Is it clear, students? Acha, Sanya says no. Very good. Okay. Because all of you are students, all of you are with IITian hubs, and you are into safe hands. Okay? You are really into safe hands. Don't worry about that. So whatever speed is slow or whatever you feel it in that case, and according to me, speed is really good, proper enough, nothing to worry about it. Okay, things are going fine with it. It's only this pandemic is creating problem, but be with it. Okay. So now can I erase this? तो यहाँ पे जनरल स्टेटमेंट हो सकता है. अगर किसी ने पूछा स्टूडेंट व्हाट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ध्यान से सुना, what is the electric field intensity for a point just outside any shaped charge conductor, any shaped. अगर मैंने इसको asymmetrical भी ले लिया होता तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा अपन epsilon 0 K पर मीडियम. ये ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लेना, ये सब जगह पे यूज होगा. शायद आई डोंट नो अबाउट इट, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कहाँ पे सर ने ये तुम्हें सीधा यूज कर दिया होगा. फॉर अ पॉइंट एनी शेप कंडक्टर आ गया क्लोज टू इट, तो सिग्मा अपन epsilon 0 K पर मीडियम डाल दिया.
I get again. And sigma is what? Charge per unit area. लेकिन वो well defined object नहीं है. हाँ, तुम्हें मालूम है कि total charge on the enclosed surface is W. बस इसका यूनिट होगा कूलम पर मीटर स्क्वायर. तो ये सबसे important formula ये है for any shaped conductor, but for a point very close to the charge conductor. And outside, close and outside. ये भी ध्यान रखना. Is that clear? For a point over here. So once again, electric field intensity inside 0. On the surface and just outside, either this or this. For a point at a P equal to R, this we consider. If in case if I happen to give a comparison between both of them, capital R square upon small r square. Can I erase this now? Yes, sir. Yes, sir. Because whenever you go for different shape objects, जब भी तुम जाते हो ना, other than what I'm doing it, and if you are trying to do it for your NEET point of view or for your main advanced point of view, always follow this pattern to understand it in that case. And listen to sirs very carefully. You'll be able to catch it more properly. Okay, now let us go for another shape concept. Now we go for electrical intensity. Due to an infinitely long straight. Due to an infinitely long straight charged wire. This charged wire I can consider the kind of a cylinder. So the charge is distributed, students, around the length. The charge is distributed around the length we consider. So we are trying to go for the next application, the second application. Electrical intensity due to an infinitely long straight charge wire. Okay, now see students, I'm not going to solve for this. Let's see how many people can get the answer. The way I did it for the previous one, I want to get the answer for this. सिर्फ मैं इसका मैं तुम्हें डायग्राम बना के देता हूँ. अगर मुझे चार्ज वायर चाहिए तो मैं चार्ज वायर को अज्यूम करूंगा कि सिलेंडर है. ओके, दिस इज माय मेन सिलेंडर. ओके, तो इसका मैं लेंथ में लूंगा, कैपिटल एल में ले लेता हूँ. कैपिटल एल इज द लेंथ. इसका ये है एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस मैंने ले लिया. और ये जो ले लिया मैंने, ये जो है मेरा कैपिटल आर हो जाएगा. ये एक्चुअल रेडियस ऑफ द सिलेंडर है, ये सोचो. ओके, ये रेडियस ऑफ द सिलेंडर. And the charge induced on the cylinder is, let us say, positive because of, and it's throughout the length. So there are positive charge is induced throughout the length we consider, and they are close to each other. I can consider this manner. जो इफेक्ट राइट हैंड साइड में होगा ना स्टूडेंट्स, वो इफेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में होता है. यानी अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड नहीं बताता हूँ, उसका मतलब ये नहीं जो राइट हैंड साइड में हो रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड में भी हो रहा है. Is that clear, students? So second part I'm trying to go for is what? Electrical intensity due to an infinitely long straight charge wire or a cylinder. I want to get an answer for electrical intensities के लिए. इसके पहला वाला क्या था फॉर्मूला? 1/4 pi epsilon naught k capital Q upon small r square. Small r square is the distance of the Gaussian surface from the center of your main spherical conductor. अगर मुझे कंपेयर करना है तो कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर सिग्मा में आता है. अगर मैंने पॉइंट वेरी क्लोज ले लिया तो Q अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर आएगा, या सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0. बस इनसाइड 0. यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इनसाइड विल बी 0. Now can you get an answer for this? Let's see. I'm giving you all 3 minutes. Let's see how many people are getting the answer.
When a question is written on the board, electric field intensity due to an infinitely long straight charge wire. I want an answer for that. Okay? Yes, sir. And the diagram is, the diagram is given to you all. Yes, anyone? Sir, only 1 minute. Yeah.
Yes, anybody? Shall I solve it for you all? कुणाल पटेल, आज पर कहाँ से आएगा माय डियर? आज पर आएगा ही नहीं नीचे। नो माय डियर, आज पर नहीं आएगा। कुणाल, हाँ सर। इनकरेक्ट माय डियर। Yes sir, I will try again. Shall I do that, students? Shall I do it? Yes sir. See one thing now, I don't know why you are not able to get it. तुम्हारा लेंथ कैपिटल एल दिया है, कैपिटल आर इसका रेडियस दिया हुआ है। मैंने पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर वी कंसीडर, तो तुम क्या करोगे? सर एक गॉसियन सिलेंडर बना दो ना, एक सरफेस बना दो अराउंड इट, तो इसी को पूरा एक इंक्लोज करो। अभी मैंने क्या किया, एक सेक्शन को मैं इंक्लोज करता हूँ, तो मेरा जो गॉसियन सिलेंडर हो सकता है वो पूरा भी आ सकता है, पूरा भी बना सकता है। लेकिन मैंने क्या किया वहां पर, आई एम टेकिंग दिस पार्ट ऑफ इट, यानी ये क्या हुआ मेरा, एंड दिस हैज टू बी डॉटेड ऑलवेज। ओके, ये क्या है डॉटेड, ये हुआ मेरा गॉसियन सिलेंडर अराउंड दिस। यानी मैं एक सेक्शन के लिए पार्ट लूंगा, ये पार्ट तो पूरे के लिए हो सकता है, इट कैन बी फॉर एंटायरली यू कैन कंसीडर, एंड दिस पर्टिकुलर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द सरफेस। यानी अभी मैं अज्यूम करूंगा कि अगर मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लिया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिया है स्टूडेंट्स, तो सेम पॉजिटिव चार्ज आई कंसीडर पॉइंट P and over here on the surface. I consider over here. Agreed. Let us say that the distance of this particular point P from the center I'll consider will be small r. Agreed. That's the radius of the cylinder we consider. Length of the cylinder, ये capital बड़े length, इसके लिए मैंने छोटा l ले लिया, small l. Okay, small l is the length of your Gaussian cylinder. Small r is the radius of this particular cylinder, and this is the axis मैंने लिया है. I want to find out electric field intensity at this particular point. तो अभी मैं क्या करूँगा? फिर वापस आप एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे ले लो, एरिया, है ना? तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरह से जाएगा, है ना? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ पॉजिटिव, Sun is putting the answer, absolutely correct. ये है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी परपेंडिकुलर सरफेस. एग्री स्टूडेंट्स? यानी फ्लक्स कहाँ से पास होगा? Will the flux is passing through the curved surface? तुम बोलोगे हाँ, अभी ध्यान से देखना. सपोज अगर मैं टॉप सरफेस लेता हूँ, इसको बोलते हैं प्लेन सरफेस. What I call this as plane surface. प्लेन सरफेस. स्टूडेंट्स मुझे ये बताओ, प्लेन सरफेस का एरिया वेक्टर किस तरफ होगा? प्लेन सरफेस का एरिया वेक्टर किस तरफ होगा? सर ये होगा इसका एरिया वेक्टर प्लेन सरफेस का. इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रही है? सर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है अलोंग द सरफेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड. तो देखो एरिया वेक्टर प्लेन सरफेस का इस तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है. इन दोनों के बीच में क्या एंगल हो रहा है? इन दोनों के बीच में क्या एंगल हो रहा है? सर 90 डिग्री हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है. तो विल देयर बी एनी फ्लक्स पासिंग थ्रू द प्लेन सरफेस? नो. So flux is equal to 0 through plane surface, and flux is maximum through curved surface. किसका? मेरा, तुम्हारा, या ये जो गॉसियन सिलेंडर है उसका? तो बोलेंगे सर गॉसियन सिलेंडर का. क्या ये क्लियर हुआ सबको? हाँ सर. तो तुम्हें जब भी तुम्हें फ्लक्स के बारे में देखना है तो तुम ऊपर और नीचे जाओगे नहीं, टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस पे जाओगे नहीं.
क्योंकि वहां पे E और A दोनों का परपेंडिकुलर cos of 90 0 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे होता है cos of 90, ये cos of 90 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तुम्हें थीटा 0 हो जाएगा, cos of 0 1 हो जाएगा, फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। क्या इतना क्लियर हुआ सबको? हाँ सर। Okay, now let us move further ahead. अभी आगे बढ़ो। तो अभी तुम्हें फ्लक्स चाहिए, तो how do you go about with it? So let us find out the flux we consider. So let us find out flux for the infinitesimal element first. So we go for d phi e. I'm getting it. Flux we consider, and that is equal to what? So it's E dot ds you are taking it, and that will be equal to E cos theta into dx. Agreed? Cos of 0 is 1. Therefore, can I say d phi e will be equal to what? E into ds we consider. But are we trying to find out flux for the small area, for the total we consider? So for the total surface area, we have to go for integration, around the closed surface we consider. So what is integration of d phi will be flux, total flux. यहाँ पे electric field intensity, sir वो तो constant होगा in this case. Is that clear? That will be constant we consider. ये होगा integration of ds. अभी मुझे बताओ integration of ds किसका निकालना है? क्या ये मेन सिलेंडर का निकालना है या गॉसियन सिलेंडर का निकालना है? तो मतलब सर ds हमारा गॉसियन सिलेंडर है, और ये क्या होगा? सरफेस एरिया होगा, 0 to 2 पाई RL होगा। यानी तुम्हारा ये होगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब भी तुम लेते हो ना स्टूडेंट्स, ये होगा E और इंटीग्रेशन ऑफ ds। सर ये कर्व सरफेस एरिया, अगर मैंने तुम्हें सिलेंडर दिया तो उसका कर्व सरफेस क्या होगा? सर 2 पाई R, तो इसका सर्कमफ्रेंस होगा और लेंथ L है। देखो दिस इज 2 पाई R वी कंसीडर एंड लेंथ इज L। तो कैन आई से 2 पाई स्मॉल r, ये ध्यान में रखना, स्मॉल l ना कि कैपिटल L। कैपिटल L और कैपिटल R मेन सिलेंडर का, ये समझ में आया? अरे हाँ सर, अभी तुम्हें पता है करके कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? एज पर गॉसेस लॉ, व्हाट एक्जैक्टली टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स? सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 1 अपॉन एप्सिलॉन फॉर अ मीडियम इनटू कैपिटल Q, है ना, व्हिच इज आल्सो इक्वल टू Q अपॉन K फॉर अ मीडियम इनटू एप्सिलॉन 0। ये कहाँ से आया? ये तुम्हारा गॉसेस लॉ। कैन आई सब्स्टिट्यूट दिस बैक ओवर हियर? यस। तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? सर ये तुम्हारा है, ये होगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0 K फॉर मीडियम, यानी ये इस तरफ आ गया, 2 पाई RL नीचे आ जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई स्मॉल RL। क्या ये क्लियर हुआ सबको? हाँ सर। Are you getting it? And if now somebody asks you students, what's the formula for electric field intensity, students? For a charge cylinder at P distance R from the center of the main cylinder, then it is Q upon epsilon 0 K for a medium into 1 upon 2 pi small r into small l. Small r into smaller, we consider in that. Is that clear? And this unit will be equal to Newton Coulomb inverse. Agreed? Now, if I want to write on this in terms of lambda, can I write on lambda? और ये जो Q है, ये जो Q हम लिखेंगे ना, ये इसके लिए लिखेंगे सर स्टूडेंट्स। So I'll put it in terms of small q. This is for the Gaussian cylinder के हिसाब से। I'll put it in terms of small q. Now, students, suppose if I say what is lambda? What is lambda? If you are aware about it, lambda is what? Charge per unit length. So lambda को क्या है? Put q by l. Students, answer देखना. Lambda is equal to q by l. Everybody listen carefully. Lambda is equal to q by l. That means this is a charge. This is a charge for this part of the length. Can I consider lambda, which is equal to Q by L, can be written in terms of capital Q by capital L also for the main cylinder? Yes sir. ना, यानी स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखना, यहाँ पे ये जो Q by स्मॉलर आता है, उसको क्या मैं पूरे सिलेंडर का कैपिटल Q और पूरा लेंथ L ले सकता हूँ? क्यों नहीं? You can take it, स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? If I have to go for lambda, general formula E is equal to, listen carefully, 1 upon 2 pi epsilon 0 K for a medium into lambda upon small r, and that's your formula for electric field intensity for a point P for a Gaussian cylinder we consider. And lambda, now can I say lambda can be written as Q by L? Yes. अगर मैंने Q by capital L डाल दिया तो मेरा main cylinder आ गया. I can consider. Now suppose if I say the point is very close. The point is very close in this case. So what do I consider in that case? So now if I have to go for, so we can go for sigma. What is sigma? Answer there, na?
Everybody is what is sigma? The sigma is, the answer is now, charge per unit area of my main cylinder. What's my main cylinder? Surface area क्या होगा main cylinder का? सर ये होगा main cylinder is 2 pi capital R into L. Everybody please be over here now. Listen carefully. अगर suppose मैंने lambda को capital Q by L डाल दिया in that case, और फिर मैंने Q को substitute कर दिया, can I get my answer? Yes, I can get my answer in terms of capital R. ये तुम्हारा capital यानी I can write on this with respect to your surface area, but which part? Curved surface also. So students, at times when you solve this question, read very carefully what they are trying to ask you. But whenever they put forward questions, students, what is the formula for electric field intensity for a point P at a distance R from the Gaussian cylinder? This becomes your formula. What is lambda? Charge per unit length for the Gaussian cylinder, or for the main cylinder? Q by L. Can I run Q in terms of sigma into 2 pi RL? Why not? I can write in terms of sigma also. If I take this point very close to the charge conductor, what's my formula? For any point close to any charge conductor, what's the formula always? The formula will be E is equal to sigma upon A epsilon. This is the standard formula for all. Is this clear? Yes, sir. Shall I erase this now? Sir, only 1 minute. Okay. Just let me know when you finish it, okay? Yes, sir. Yes, sir, done. Okay. The admit card for mains has come in place for 2021. And the fourth session might be all postponed over Asha. Third session because which Silani is between 3rd and 9th of August. And these exams are getting over on 27th. The third attempt of mains for 2021 is getting over on 27th. That's the last date. And which Pilani ka 3rd to 9th August, they have given their dates. So 27 to 3rd के बीच में बहुत कम gap है. Fourth attempt was just after that. NTA ने डाला था, लेकिन now which Pilani has put his dates in that case, so शायद ये अभी और fourth attempt पीछे चला जाए. यानी advance और पीछे चला जाए. And September 12th already NEET आ चुका है. तो September NEET आ चुका, तो maybe after a week शायद advance का possibility है. Y'all don't ever wait for such kind of things. Now, please don't linger, don't keep your work pending. Go on making a schedule, timetable, and go on doing the studies consistently. Your bodily activities should be taken care of.
some kind of exercise at home or cycling or some badminton down with your dad or mom or whatever it is very important. Okay, the last application. Now this is for an infinitely sheet conductor, students. Suppose in case if I ask you to find out electric field intensity, students, okay, the question is to find out electric field intensity. The third application. And that's the last one, students will do it, okay? Electric field intensity due to a charged infinite plane shift, due to a charged infinite plane sheet. उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये है, स्टूडेंट ध्यान से सुनना. If in case if I happen to go for a sheet, think as if in this manner I've taken a sheet, and this sheet can be extended on all the sides. Okay, I can extend this sheet on all the sides. It can be infinitely long. But what exactly I've done it is, I've seen to that this particular sheet is charged positively throughout, and the positive charge is induced everywhere, and they are close. The charges are very close. यानी अगर ये मैंने साइड 1 लिया है तो इसके पीछे की साइड में भी चार्जेस है स्टूडेंट्स, दोनों तरफ है. ये फेज 1, ये फेज 2, दोनों तरफ चार्जेस है ना. अगर मैंने इनफाइनाइटली चार्ज ऐसा शीट लिया है तो अभी इसको कैसे समझे, गॉसियन सरफेस कैसे समझे इसको, यहाँ पे गॉसियन सिलेंडर कैसे बना, क्योंकि इनफाइनाइटली. तो तुम क्या करोगे सर, हम ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे गॉसियन सिलेंडर बनाते हैं. नहीं ध्यान से सुनना. सपोज अगर मेरा ये चार्ज मैंने इसको कंसिडर किया है, ये चार्ज को मैं कंसिडर करता हूं, तो आई ट्राई टू गो फॉर अ गॉसियन सिलेंडर. जो इस तरफ मैंने बना दिया, और एक गॉसियन सिलेंडर इस तरफ आ गया. दोनों का डिस्टेंस सेम है फ्रॉम द सेंटर, यानी ये जो चार्ज है ऑन ईदर साइड इज एग्जैक्टली एट सेम डिस्टेंस. ये तुम्हारा एरिया ds होगा, यहाँ पे भी तुम्हारा एरिया ds होगा. एग्रीड. एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर. एरिया वेक्टर इज ऑलवेज, क्योंकि यहाँ पे भी चार्ज है, ये तुम्हारा एरिया वेक्टर हुआ. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जा रही है सर, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो सीधा परपेंडिकुलर सरफेस होगा. यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो भी क्या होगी सर, वो भी परपेंडिकुलर होगी. यानी यहाँ पे थीटा क्या बन जाएगा, तो E and ds are both E bar and ds bar are both mutually parallel to each other, we consider perpendicular surface. So theta क्या बन जाएगा 0, so cos of 0 क्या बन जाएगा 1, so flux maximum होगा. Agreed. और ये जो फ्लक्स है is passing through small area. We need to go for the total. Now can anybody give me an answer for this? इतना मैंने हिंट दे दिया तुम्हें. और दूसरी बात, अगर तुम देखोगे ना, पहला वाला जो डायग्राम था, ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, पहला वाला जो डायग्राम था ये मेरा मेन सिलेंडर था, गॉसियन सिलेंडर ये था. एवरीबॉडी लिसन केयरफुली. तो अगर ये गॉसियन सिलेंडर था तो कर्व सरफेस एरिया से फील्ड लाइंस पा रही थी परपेंडिकुलर, जो प्लेन सरफेस होगा वहां पे फ्लक्स पास ही नहीं हो रहा था. लेकिन यहाँ पे उल्टा है. देखो अभी ये सिलेंडर मैंने ऐसा उल्टा कर दिया. तो नाउ इफ आई से, ध्यान से सुनना, सपोज अगर मैंने यहाँ पे एरिया पार्ट लिया ds, या यहाँ पे मैंने एरिया वेक्टर लिया ds. देखो ये एरिया वेक्टर इस तरफ जा रहा है, ये गॉसियन सिलेंडर का ये एरिया वेक्टर किस तरफ जा रहा है. नाउ स्टूडेंट्स कैन यू टेल मी, इस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या एंगल फॉर्म हो रहा है, व्हाट इज द एंगल फॉर्म हो गया. फिर यहाँ पे तो 90 हो रहा है, तो यहाँ पे तो फ्लक्स होगा ही नहीं, नो फ्लक्स. यहाँ पे भी 90 हो रहा है, यहाँ पे भी फ्लक्स नहीं होगा. यानी स्टूडेंट्स जब भी हम इनफाइनाइटली शीट के लिए जाते हैं और अगर मैंने गॉसियन सिलेंडर कंस्ट्रक्ट किया तो लिसन केयरफुली, कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स पास नहीं हो रहा है, प्लेन सरफेस से पास हो रहा है. यानी I've assumed that the charge is over here, I've assumed the charge is over here. ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ सर. Okay. Now can you give me the answer for electric field intensity for any shaped conductor? Plane sheet, infinitely plane sheet. तो तुम क्या करोगे स्टूडेंट्स, देखो बहुत ही इजी है स्टूडेंट, प्लीज एवरीबॉडी लिसन केयरफुली. अगर मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, अगर मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए तो मैं क्या करूंगा सर, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए तो क्या करोगे
सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन राइट हैंड साइड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, दोनों का एडिशन होगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ d phi फॉर द फर्स्ट सरफेस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ d phi फॉर द सेकंड सरफेस अराउंड द क्लोज, यानी पूरे सरफेस के लिए आई कैन कंसीडर। इसको मैं कैसे लिखूंगा? फिर ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू डी एस, क्योंकि कॉस ऑफ जीरो विल बी 1। ये किसके लिए स्टूडेंट्स? सरफेस एरिया 1 के लिए होगा, है ना, प्लस integration of E into ds for the surface area 2, which is equal to E constant. Students, what is integration of ds for right hand side? 1, capital A, पूरा surface area। मतलब वो अगर शीट इनफाइनाइटली ऐसे बढ़ते जाएगा तो एरिया भी बढ़ेगा, तो दैट इज कैपिटल ए। इसका क्या होगा सर? ये भी E इंटू हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स? Students, the total electric flux for an infinitely charged plate we consider is equal to what? Is equal to 2EA. क्या ये clear हुआ students? Yes, sir. Yeah, all of you, not 1, 2, and 3, all the students who are into the meeting. So Yes, the total sir. electric flux for an Yes, sir. infinitely charged plate we consider is 2EA. Now students, if I ask you, what exactly your Gauss's law speaks about in this case? If I happen to speak about it, sigma stands for what? The charge per unit area. ध्यान से सुना, sigma stands for charge per unit area. So what exactly charge? Sigma into A. Now if I ask you students, can I write down total electric flux in terms of sigma? Can I write in terms of sigma? Yes or no? Yes, sir. Let's do sigma into A. तो क्या लिखूंगा? How do I consider? We'll write answer twice. Answer देखना, twice E instead of A. Instead of A, ये देखो, ये सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं, instead of A, can I write down Q upon sigma? क्या ये क्लियर हुआ? हाँ, sir. Now can you tell me, as per Gauss's law, what is the formula for total electric flux? What is the formula for total electric flux we can consider in terms of? 1/4. Q by A. I can consider in that case. I can consider in terms of Q by A. Yeah, I can write down E in terms of what? Q by A. I can put in that manner also. So if in case if I happen to go for ये वाला formula, agreed? और अगर मैं ये वाला formula लेता हूँ, दोनों को अगर मैं if in case if I happen to consider in that case, so what exactly I can write down? I can write down, students answer सुनना. As per Gauss's law, I can write down 2EA. The answer सुनना students, 2EA. I can write down over here in this form. Sigma A upon epsilon 0. Now can I cancel? Yes. So what's the formula for E? Sigma upon 2 epsilon 0 K for a mean, which can be written as E is equal to sigma upon 2 epsilon for a medium. So हमेशा जब भी तुम्हें infinitely sheet के लिए बारे में कभी पूछेगा ना स्टूडेंट, तो हमेशा फॉर्मूला क्या होगा? ये है E is equal to sigma upon 2 epsilon for a medium or 2 epsilon 0 K for a medium. This was your last derivation. और ये किसके लिए हम लोग ने निकाला था? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 फॉर एनी शेप कंडक्टर। अगर तुम्हें इसको ध्यान में रखना है तो ये चलो, ये तुम्हें अगर नहीं पता है तो फॉरगेट अबाउट इट। इज इट अ शेप का एनी शेप कंडक्टर? यस। अगर सपोज मैंने पॉइंट यहाँ पे दिया तो स्टूडेंट्स कैन यू टेल मी व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0। इस तरफ, उस तरफ भी तो है ना, तो क्या हो जाएगा सर? इट विल बी व्हाट? एडिशन ऑफ बोथ ऑफ देम वी कंसीडर इन दैट केस। So the total electric flux will consider what? Sigma upon 2 के epsilon 0 आ जाएगा तो, and 2 comes in the denominator part of it. ये ध्यान में रखना। Is this clear? Yes, sir. Okay. So students, next lecture, I want you to revise this part very clearly. Okay, learn all the mathematical formulas properly. Is that clear? And next lecture, try to see to it that you go through the part of it and we'll do the capacitors part of it and we'll solve problems. Okay. So we wind up the sessions right now. Bye, sir. Thank you, sir.